Hello everyone, my name is Biswas Singh and I welcome you all at Uruvela BPSC. Today in this video format, I am going to discuss Persian and Greek influences on Mauryan art and sculpture. ये टॉपिक बीपीएससी मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी मेंस के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर्स पे बेस्ड होते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू सी मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर्स with a special reference to Persian and Greek influences. Starting with the Mauryan were the first to establish an empire in India, and they ruled over a vast territory of Indian subcontinent and were engaged politically, economically, and culturally with foreign countries. Well, they had maintained friendly relations with West, such as Greco-Macedonians and Achaemenids of Iran. Even the cultural contacts of India with Persia and Greeks existed much before the Mauryan period. Thus, it was obvious to have influence of foreign countries, especially on Persia and Greek on Indian art in one or another way, and especially on Mauryan art and sculpture. So, we are going to see Persian influence of Mauryan art and sculpture. So, friend, after the withdrawal of Alexander the Great from the northwest regions of Indian subcontinent, the regions came under the influence of satrapies or governors. Satrapies are called governors, and at that time Chandragupta Maurya was there. So he defeated most of them, including Seleucus I of Macedonian. And Achaemenid rulers of Persia had various areas under their control which were in close vicinity of Mauryan Empire. Well, so therefore all these conditions favored to have Persian influence on Mauryan arts, which can be seen as follows. So Chandragupta Maurya was the founder of Mauryan Empire. So he defeated most of the satrapies, and we have just seen including Seleucus I of Macedonian. And also friends, पर्सिया Achaemenid रूलर्स जो थे पर्सिया के, वो सारे जो है मौर्यन एम्पायर के विसिनिटी में थे। तो ये सारे कंडीशंस और ये सारी चीज़ों का ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस मौर्यन आर्ट्स पे और इसका स्कल्पचर्स पे ऑब्वियसली आना स्वाभाविक था। So let's see what are those Persian influence. Well, starting with the Persian pillars was standing on bases like a rectangular block or bell-shaped structure. This bell-shaped or inverted lotus structure was adopted in Mauryan pillars. However, this style was adorned with on the top of Mauryan pillars. Okay. सो जस्ट कीप इन माइंड कि पर्सियन पिलर्स जो होते थे उनके बेसेस होते थे रेक्टेंगुलर और बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, बट मौर्यन पिलर्स में क्या है कि मौर्यन पिलर्स के टॉप पे वो चीज़ होते थे। वेल, द नेक्स्ट inscription of proclamations was prevalent in the West Achaemenidian Empire, and this is also found on many Mauryan sculptures. So well, आप इसे भी याद रखें, inscription of proclamations जो हैं वो पर्सियन स्कल्पचर्स पे भी थे, और द सेम वी कैन सी ऑन Mauryan sculptures. Well, the next, the palace of Chandragupta Maurya has resemblance to the Achaemenid palace. जो Achaemenid palace है और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है वो लगभग मिलता जुलता है। Well, the next, the capital of pillars in Persia contained the statues of human. However, the same concept can be seen only with the difference that the capital of Mauryan pillars contained the statues of animals. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पर्सिया में जो पिलर्स होते थे और उस पर जो कैपिटल पार्ट होता था वहाँ पे स्टैचू जो होते थे वो ह्यूमंस के हैं, लेकिन मौर्यन पिलर्स पे क्या है कि वो एनिमल्स का स्टैचू है कैपिटल पे। द नेक्स्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट ऑफ ईरान हैज़ बीन यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है उसमें बहुत सारे अशोकन इंस्क्रिप्शन पे खरोष्टी स्क्रिप्ट भी पाया गया है, जो कि ईरान में भी ईरान का है। वेल, द नेक्स्ट, the use of word lipi in Ashokan inscription and Dipi in Persian inscription. So there's a similar kind of thing कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में आपको एक वर्ड है लिपि वो मिलता है, और पर्सियन इंस्क्रिप्शन में वही हमें दीपी के रूप में मिलता है। तो दिस काइंड ऑफ सिमिलैरिटी वी कैन फाइंड इन पर्सियन एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन। वेल, द नेक्स्ट, बोथ पर्सियन एंड मौर्यन पिलर्स हैव पॉलिश्ड सरफेस। तो आप इसे भी याद रखें कि पर्सियन पिलर्स भी पॉलिश्ड, उसके जो सरफेस होते हैं वो पॉलिश्ड होते थे काफ़ी अच्छे तरीके से, और मॉडर्न पिलर्स में भी द सेम काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन फाइंड। सो फ्रेंड्स, लाइक दिस वर द पर्सियन इन्फ्लुएंस, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड सो दैट यू कैन हैव अ गुड आंसर। वेल, द नेक्स्ट वीक आर गोइंग टू सी हेलेनिस्टिक और ग्रेको मैसेडोनियन इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर।
So the Greek influence on Indian art can be seen following the conquests of Alexander the Great. Thus, in after the departure of Alexander, the Greeks are said to have participated in the army of Chandragupta Maurya against the Nanda dynasty. Well, before the Maurya dynasty, there was Nanda dynasty, and Chandragupta Maurya was the founder of this Mauryan empire. So, consequently, Chandragupta Maurya founded the Maurya empire. The Mauryan ruler, including Chandragupta Maurya, maintained a strong relation with the Greek rulers. का कुछ जो लाइक स्टार्टिंग के दो तीन ऐसे मौर्यन रूलर्स हैं जिनका काफ़ी अच्छा रिलेशंस रहा ग्रीक रूलर्स के साथ. सो ऑब्वियसली दीज वर द रीजन्स कि मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर्स पे हम लोग देख सकते हैं ग्रीक के इन्फ्लुएंस को भी. Even numerous Greek ambassadors such as Megasthenes, Demachus, and Dionysius have had stayed at the Mauryan court in Patliputra. All these advancements culminated into the penetration of their art and culture in India, and the noticeable influences on the art can be seen on Mauryan art such as. So now we are going to see the Greek or Hellenistic influence on Mauryan art and sculpture. Well, so starting with अशोकस कंधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन इन ग्रीक एंड अरेमिक. ओके, अशोका का जो कंधार रॉक इंस्क्रिप्शन है वो बाइलिंगुअल है, जो ग्रीक में भी है और अरेमिक में भी है. एंड द डिजाइंस ऑफ बीड्स, स्पाइरल मोटिव, फ्लोरल पैटर्न्स एटसेट्रा on the huge stone pillar capital of Patliputra have been inspired from Greco-Macedonians. We are going to see how and what are those. So the animals, especially the horse on the Sarnath lion capital of Ashoka and the bull of the Rampurva capital, are said to be typically Greek in realism and belong to a type of highly realistic treatment which cannot be found in Persia. Well, जो हम लोग जो देखते हैं सारनाथ लायन कैपिटल जो है अशोका का और रामपुरवा कैपिटल जो बुल है उसका, तो ये बताया जाता है कि ओके ग्रीक के जो स्कल्पचर्स है हमें वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो उसी रूप में पाए जाते हैं, उसी रूप में बनाए गए हैं. तो उसी का इन्फ्लुएंस हम लोग देखते हैं सारनाथ लायन कैपिटल पे और रामपुरवा कैपिटल पे. द नेक्स्ट, द वे द रोज ऑफ रोजेट्स ऑन मौर्यन पिलर्स abacus have been designed, the same rows are framed on Greek wall paintings. तो यहाँ पे क्या है कि जो आप जब लाइक मॉडर्न पिलर्स देखेंगे जो उसके जो एबेकस है उस पर कुछ डिजाइन किए गए हैं, तो वो सेम डिजाइन वी कैन फाइंड ऑन ग्रीक वॉल पेंटिंग्स. एंड द टेराकोटा आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड हैज ग्रीक मोटिव्स स्पेशली विथ फेसियल टाइप्स. ओके, जो मौर्यन पीरियड के समय जो टेराकोटा आर्ट्स होते थे उनके जो फेसेस होते थे वो जो मोस्टली जो है वो ग्रीक आर्ट से मिलते जुलते हैं. Well, the next, the circular style of Bhairath temple, Rajasthan, which is in Rajasthan, and the same circular structure in a stupa at Mahabodhi temple in Gaya are said to have adopted from the Greek circular Thalos temple. So, well, जो Greek में एक Thalos temple है, the same style में बनाया गया है जो circular pattern है जो कि हमें बैरात टेम्पल में भी मिलता है और महाबोधि टेम्पल के स्तूपास के पास भी मिलता है. एंड द नेक्स्ट, द डायमंड थ्रोन built by Ashoka in the Mahabodhi temple has similar flame palmettes designs that are found in Greek flame palmettes. The same has been found in Patliputra capital as well. So ये जो flame palmet आप जब उसे देखेंगे अब just go to the Google image and find out diamond throne, then you will find their flame palmettes. So the same kind of things we can find in Greek sculpture and the same has been found in Patliputra capital. And a few monumental yakshas are considered as the earliest freestanding statues in India. The dress style with lines of geometric folds is considered as Hellenistic innovation. Well, like it is said that yakshas are freestanding statues in India. ये शुरुआत यहाँ से हुआ था. यक्षा जो लोग अक्सर देखते हैं यक्ष यक्षिणी, तो यक्ष जो है उसे बोला जाता है कि दिस वर दी अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचू इन इंडिया. और इसके जो ड्रेसिंग स्टाइल है एंड द खासकर जो लाइन ऑफ ज्योमेट्रिकल फोल्ड्स हैं वो कहा जाता है कि हेलेनिस्टिक इनोवेशन है. ग्रीक में ऐसे मॉन्यूमेंट्स पाए गए हैं जिनमें तो सेम पैटर्न पाया गया है. सो वेल फ्रेंड्स, these were the Persian and Hellenistic influence. Whenever you get a chance to write a question on this
Persia or Greek influence on Mauryan art and sculpture. So you can use these points. It will help you in writing. It will help you in writing a good answer. So from the above findings, it is clear that the Mauryan sculptures were inspired from the foreign style of sculptures. However, they carry their own style as well. हाँ, ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ ओके ग्रीक और पर्शियन के इन्फ्लुएंस थे. मौर्यंस जो इंडियंस थे उनके खुद के भी एक स्टाइल थे. Mauryan sculptures were totally not copied from others. They just used some of their artistic elements to make a sculptures beautiful and also to show the world through a sculptures that there existed cordial relation between Mauryans and ruler of other nations. तो ये भी एक point है. So now let's see what were those Persian influence that we discussed in this video. So well, the first one, Persian pillars standing on rectangular block or bell-shaped structure, and these are structures on the top of Mauryan pillars. हम लोग already discuss कर चुके हैं. The next, inscription of proclamations prevalent in the West Achaemenidian and Mauryan sculptures. The palace of Chandragupta Maurya has resemblance to the Achaemenid palace. Their statues of human in Persian capitals and their statues of animals in Mauryan capitals. We find this. Khorostian script of Iran has been used in Ashokan inscriptions, and the use of word lipi in Ashokan inscription and dipi in Persian inscription. So आप इसे ध्यान रखें इन points को. Both Persian and Mauryan pillars have polished surface. So these are the points that we discussed right now. Now let's see Greek influence. So Ashoka's Kandhar bilingual rock inscription in Greek and Aramaic. The designs of beads, spiral motifs, floral patterns, etc. on the huge stone pillars capital of Patliputra have been inspired from Greco-Macedonians. The lifelike rendering of animals on Sarnath and Rampurva capitals have similarity with animal sculptures designed in Greek kingdom. We have just seen. The way the rows of rosettes on Mauryan's pillars abacus have been designed, the same rows are framed on Greek wall paintings. Terracotta art of Mauryan period has Greek motifs, especially with facial types. The circular style in Bharat, that is in Rajasthan, and Mahabodhi temple, that is in Gaya, is an adoption from the Thalos temple of Greece. Similar flame palmates in diamond thrown at Mahabodhi temple, Patliputra capital, and Greek sculptures. We have just had discussion on it. The dress style with the lines of geometrical faults of yakshas is considered as a Hellenistic innovation. So friends, these are the Greek influences. These were the points that you can write in your answer, and I hope this will help you. This will help you writing a good answer. So well, friends, thank you for watching this video, and I hope you liked this video. And if it is the case, like it, share it, and subscribe the channel. Thank you.